Hi guys, I'm Shikha Divedi and how are you? I hope you all guys are very fine and I'm also fine as usual. So guys, actually आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. From today onwards एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ and that series is प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज. ओके, सीरीज का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इसके लिए मैंने क्या करा है, एक आपकी बुक सेलेक्ट करी है आर.डी. शर्मा. राइट, आर.डी. शर्मा बुक से हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे सम्स को हम सॉल्व करेंगे. राइट, सारे सम्स को हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना रह जाए. और जैसे जैसे आपके सम्स आप सॉल्व करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती चली जाएगी. ठीक है, आपका हर सम के साथ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा. ठीक है, राइट, इज दैट क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एक्सरसाइज 2.1. राइट, this is the first exercise of the chapter polynomial, exercise 2.1 और इसका सम नंबर 1 मैंने लिया है. What is the sum? Find the zeros of each of the quadratic polynomial. Right? Find the zeros of each of the quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and their coefficients. Right? This is our sum. ये हमसे बोल रहे हैं कि like find the zeros of the quadratic polynomial. हमें quadratic polynomial के zeros को find out करना है. Right? And then verify the relation. उसके बाद हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स और जीरो, हमारे पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स हैं उसमें एक रिलेशन हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लेट्स सी. हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 8. Right? We have to just find the zeros of this quadratic polynomial. हमें इस quadratic polynomial के zeros को find out करना है. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि zeros find करने का मतलब है finding the zeros of the polynomial f(x) कि हम solve करें f(x) is equal to 0. हम polynomial equation f(x) is equal to 0 को solve करें. ठीक है, by solving we will be able to get the zeros of that polynomial equation. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f(x) is equal to 0 इसे we are going to solve. Okay, so f(x) is equal to 0. We have to solve it. ठीक है, what is the f(x)? f(x) is x squared minus 2x minus 8 is equal to 0. Right? We have to solve this quadratic equation, quadratic polynomial. कैसे solve करेंगे? How we will solve this? We have middle term splitting method. Right? We know very well middle term splitting method. So 8 is here. Right? 8. So 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 4 minus 2 2. So हम ये ले सकते हैं. Right? Okay. So x squared minus, on the place of 2 we are going to write 4 minus 2. Okay, 4 minus 2 x minus 8 is equal to 0. Right, now we will open the bracket. So this is minus 4x minus minus plus 2x minus 8 is equal to 0. Right, अब हम इन two terms में देखेंगे what is the common. Right, what is the common thing in these two terms? x common है. Right, so what is left here? X minus what is left here? 4. X minus 4. Okay, अब हम देखेंगे what is common in these two terms. Obviously, you know, we can see 2 is common. So 2x minus 4 is equal to 0. Right? And now what is common in whole? X minus 4 हमारा common दिख रहा है. So we will take x minus 4 common. Right? So what is left in this term? Only x is left. Plus here what is left? Only 2 is left. So x minus 4, x plus 2 is equal to 0. और इससे हमें पता चलता है कि either x minus 4 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0. ठीक है, तो इक्वेट करते हैं. x minus 4 is equal to 0 implies that x is equal to 4. Right, x is equal to 4. And if x plus 2 is equal to 0, so that means x is equal to minus 2. x is equal to minus 2. तो assume कर लेते हैं. Right, these are the two zeros of this polynomial. तो assume कर लेते हैं let alpha is equal to 4. Right, let alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 2 and beta is equal to minus 2. तो हमने zeros जो हैं कैलकुलेट कर लिए हैं. We have calculated the zeros of this quadratic polynomial. ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? What to do next? हमें रिलेशन वेरीफाई करना है. We have to verify the relation between its zeros and coefficients. ठीक है, so पहले क्या करते हैं? Sum of the zeros करते हैं. Right? So alpha plus beta, that is 4 minus 2
दिस इज 2, राइट. अब कोफिशिएंट्स के टर्म्स में देख लेते हैं. मैं ले रही हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? चेक करते हैं. दिस इज -2, राइट. दिस इज -2. Minus already we have, so minus plus 2, okay, upon coefficient of x square. What is the coefficient of x square? That is 1, okay, 1. So 2 upon 1, this is 2. And see, alpha plus beta is also 2, right? Alpha plus beta is also 2. And we got this in the terms of coefficients, we got that is also 2. So what we concluded, क्या relationship हमने verify किया? कि alpha plus beta is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. अब आप इसे लिखोगे alpha plus beta is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, right? ये हमने रिलेशन वेरीफाई किया. अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के टर्म्स में भी देखते हैं, राइट. सो alpha into beta. What is the value of alpha? 4. Beta -2. So 4 into -2, that is -8. Okay, that is -8. अब हम coefficients के terms में देखते हैं. So I am writing constant term, okay, constant term upon coefficient of x square. Constant term upon coefficient of x square, right? So what is the constant term? Constant term, this is -8, right? You can check here, this is -8. -8 upon coefficient of x square. What is the coefficient of x square? That is 1. So -8 upon 1, that is -8. Okay, this is -8. And see guys, alpha into beta, this is also -8. तो हमने क्या रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया? Alpha into beta, like product of the zeros is equal to constant term upon coefficient of x square, right? ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. Is that clear? Okay. So this was our sum number first. Okay, sum number 1 का problem number 1 हमने solve किया है. ठीक है. अब हम next question लेते हैं. Next question is, just note down our next question. Next हमारा जो quadratic polynomial हमें given है, you have to note down. That is, yes, I'm writing here. This is sum number 2. GS is equal to, okay, GS is equal to 4s square, right? 4s square minus 4s plus 1. Minus 4s plus 1. ये हमारा polynomial हमें given है, right? And this is the polynomial in variable s. ये जो हमारा polynomial है किस variable में given है? Variable s में given है, ठीक है? So again, we have to find the zeros. तो हम solve करेंगे GS is equal to 0. Fine, we will just solve the polynomial equation. GS is equal to 0. So GS is equal to 0. And what is the value of GS? This is 4s square minus 4s plus 1 is equal to 0. Right? Acha. So yes, again we will just apply the middle term splitting method. So 2 to the 4 and 2 plus 2, that is 4. Okay. So 4s square, and on the place of 4 we will write 2 plus 2. Okay, 2 plus 2, s plus 1 is equal to 0. Okay, now just open the bracket. 4s square minus 2s plus 1 is equal to 0. And what is the common? What is the common thing in these two terms? 2s is common. So here what is left? 2s minus 1. And here in these two terms what is common? Minus 1. Only minus 1 is common. So here we will write, what will be left here? 2s minus 1 is equal to 0. And now what is common in whole? 2s minus 1, this is common in whole, right? So what is left in bracket here? Only 2s is left. And here what is left? Only minus 1 is left, is equal to 0. And now we know very well, like either this is equal to 0 or 2s minus 1 is equal to 0. Actually, same terms are there. Okay. So हम equalize करते हैं. 2s minus 1 is equal to 0. So 2s is equal to 1. So s is equal to 1 by 2. S is equal to 1 by 2. आप अगर इसको लेते हो तो same thing is there actually. So same term we are going to get.
S is equal to 1 by 2, right? Am I right? S is equal to 1 by 2, S is equal to 1 by 2. So now these are the zeros of this quadratic polynomial. अब हम assume कर लेंगे let alpha is equal to 1 by 2 and beta is also 1 by 2, right? And beta is equal to 1 by 2. So these are the zeros of this quadratic polynomial. अब हमें relationship भी verify करना है, right? We have to verify the relationship also. So just what we do, alpha plus beta, right? What do we do? Alpha plus beta. So alpha is 1 by 2, beta is also 1 by 2. So 1 by 2 plus 1 by 2, that is equal to 1. Okay. अब हम coefficients के terms में solve करते हैं. So I am taking minus coefficient of x upon coefficient of x square. So coefficient of x, check. What is the coefficient of s? Oh, I'm writing s not. Sorry, x no. We will write s क्योंकि हमारा ये जो sum है ये variable s में है ना? This is in variable s. So we will write s minus coefficient of s upon coefficient of s square, right? So coefficient of s. What is the coefficient of s? This is minus 4. So we will write minus 4 upon coefficient of s square. S square coefficient is 4. So this is 4, right? Right? Okay. And see guys, again, we will check again. Minus coefficient of s. So minus and coefficient of s is minus 4. So minus, that will be plus 4, right? Upon coefficient of s square. Coefficient of s square is 4. 4 by 4, so that is equal to 1. So see, alpha plus beta is equal to 1. And this minus coefficient of s upon coefficient of s square, that is also equal to 1. So that concludes alpha plus beta is equal to this, right? So आप लिखोगे भी alpha plus beta is equal to minus coefficient of s upon coefficient of s square, right? ये relation हमने verify किया. अब हम इसको चेक करते हैं. आपको पता है हम किसमें चेक करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के टर्म्स में भी चेक करते हैं. नाउ अल्फा इनटू बीटा. So what is the value of alpha? 1 by 2. Beta, that is also 1 by 2. So 1 by 2 into 1 by 2, that is equal to 1 by 4. Okay. अब coefficients के terms में check करो. So that is, I'm taking constant term. Okay. Constant term upon coefficient of s square, right? Coefficient of s square. So constant term. What is the constant term in our polynomial? Plus 1, right? Plus 1. This is the constant term. So 1 upon and coefficient of s square. What is the coefficient of s square? That is 4. So here is 4. So guys, again, alpha into beta is equal to 1 by 4 and constant term upon coefficient of s square, that is also equal to 1 by 4. So हमारा relationship क्या verify होता है? Alpha into beta is equal to constant term upon coefficient of s square. या finally इसे note down करोगे, लिखोगे अपने solution में. Alpha into beta is equal to constant term, okay, constant term upon coefficient of s square. Coefficient of s square. Is that clear? So this was problem number 2. Sum number 1 ka problem number 2 we have calculated, right? And now problem number 3, right? Problem number 3. You have to just note it down. Problem number 3. What is the problem? See, number 3 we are solving. HT is equal to, okay, HT is equal to t square minus 15. HT is equal to t square minus 15. First of all, this is the polynomial in variable t. ये जो हमारा polynomial है, this is in variable t. ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है. देखो, कोई भी जो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. लाइक अभी तक हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करी, प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करी, दे वर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, सो दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन्स x की या वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. है ना? मैं लिख भी दे रही हूं स्टैंडर्ड फॉर्म.
स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जहां पे c हमारा कांस्टेंट होता है, x हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और a और b इसके हमारे कोएफिशिएंट्स हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स. तो कोई बात नहीं, हमारे ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो मैं कैसे बना रही हूँ. एच टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट. अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टी फॉर्म में होना चाहिए, हमारा पॉलिनोमियल वेरिएबल टी में है ना, टी फॉर्म में. सो आई एम राइटिंग प्लस 0t. एनी प्रॉब्लम? इट इज स्टिल 0, वैल्यू स्टिल 0, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है ना. सो टी स्क्वायर प्लस 0t minus 15. Now this is in a standard form, right? You can say ax square plus bx plus c. Now this is in standard form, okay? Acha. And now we have to solve the zeros, right? We have to find the zeros. So again, zero means solve करने का मतलब है we have to find out ht is equal to 0. We have to solve the equation. We have to solve the polynomial equation. ht is equal to 0. ये हमें solve out करना है, right? So ht, what is ht? This t square plus 0t minus 15 is equal to 0. Okay, we have to solve out. Fine. So हम solve करते हैं. So t square actually जब हमें इसको solve करना है, हमें t की values find out करना है, तो इसको हम 0 ही assume कर लेते हैं, हमारे लिए easy हो जाएगा, right? So this is 0 and minus 15 will go that side, that will become 15. So t square is equal to 15, right? So t is equal to plus minus under root 15. T is equal to plus minus under root 15. Okay. So हमारे zeros क्या हैं? Zeros are plus 15. Plus under root 15 and minus under root 15. हमारे zeros हमने क्या calculate करे हैं? Plus under root 15 and minus under root 15. So let's assume let alpha is equal to under root 15 and beta is equal to minus under root 15. ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, है ना. तो दिस इज हाउ हमने क्या किया कि जीरोस को फाइंड आउट कर लिया. लेकिन अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, राइट. सो वी नो द मेथड. जस्ट इमीडिएटली वी विल कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा, राइट. वी विल कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा इज अंडर रूट 15, okay. Beta is minus under root 15. So that is 0. That is 0. Okay. So alpha plus beta is equal to 0. अब coefficients के terms में हम check करते हैं. So minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay. So minus coefficient of x. अब मुझे आप जल्दी से बताओ यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं. देखिए हाँ, आज अब जो है हमारा पॉलिनोमियल इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ x, ये हमारा t में है, तो हम x की जगह पे क्या लिखोगे, t लिखोगे, राइट. फॉर्मूले में तो हमने बहुत पढ़ा है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है. लेकिन अब हमारा जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल t में है, तो वी विल राइट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर. तो सी कोएफिशिएंट ऑफ t, सी गाइस, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ t, दिस इज 0, तो माइनस 0 upon coefficient of t square. What is the coefficient of t square? That is 1. So minus 0 upon 1, that is 0. Okay, that is 0. So we verified the relation. Huh? Alpha plus beta is equal to minus coefficient of t upon coefficient of t square. Okay, अब इसे लिखोगे, you will write down alpha plus beta is equal to minus coefficient of t upon coefficient of t square. Is that clear? Next step हम क्या करने वाले हैं, alpha into beta, right? Alpha into beta. So alpha into beta. So what is the value of alpha? Under root 15. Okay, alpha is equal to under root 15. You have calculated. Alpha is equal to under root 15, and beta is minus under root 15. Minus under root 15. So under root 15 into under root 15. We know this is equal to 50. और माइनस है साथ में, so minus 50. So alpha into beta, what is the value of alpha into beta? That is minus 50. अब हम like coefficients के terms में check करते हैं. So this is constant term
upon coefficient of x square, right? So what is the constant term? Check. Constant term is minus 15. So minus 15 upon coefficient of x square. x square means t square. ठीक है ना? फॉर्मूला हमने x के टर्म्स में देखा था. तो x square की जगह आप क्या लिख रहे हो? Constant coefficient of t square, right? So what is the coefficient of t square? You can check here. This is 1. So minus 15 upon 1. That is minus 15. So what we concluded? Alpha into beta is equal to constant term upon coefficient of t square. Okay, alpha beta, that is also minus 15. Constant term upon coefficient of t square, that is also minus 15. So we concluded alpha into beta is equal to constant term upon coefficient of t square. Finally आप इसको लिखोगे, ठीक है ना? लिख दूं मैं यहाँ पे, आपको लिखना रहेगा alpha into beta is equal to, okay, constant term. Fine. This is constant term upon, right, upon coefficient of t square, right? Alpha into beta is equal to constant term upon coefficient of t square. Fine guys, is that clear? तो ये sums हमने solve करे. आप इनको फिर से रिवाइज करोगे. कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.